नमस्कार मु डॉक्टर सुनील सर्भंगिया आपको स्वागत करछि आम यूट्यूब चैनल रे पिला माने आज वीडियो रे आमे पढिबा इलास्टिसिटी पार्ट 2 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पार्ट 1 वीडियो आमे ऑलरेडी पढि सारछे चैनल रे वीडियो टी अछि आपण माने जेकी देखि दे पारिबे आज वीडियो रे आमे कोन पढिबा मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढिबा तापरे पढिबा डिफरेंट अदर फॉर्म्स ऑफ द इलास्टिसिटी आमे पढि सारछे ऑलरेडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आज वीडियो रे आमे पढिबा को जाउछु इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सो विदाउट गेटिंग एनी डिले चलो तो वीडियो टी स्टार्ट करिबा जेमिति कि मु कहिछि आज वीडियो रे आमे पढिबा मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड राइट आज वीडियो रे आमे पढिबा मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एई मेथड से कौन सब आमे पढिबा पिला माने एई मेथड से हमें दुईटा मेथड पढिबा टू मेथड्स दुईटा मेथड पढिबा फर्स्ट मेथड होची कौन पिला माने द पॉइंट मेथड द मिड पॉइंट मेथड राइट फर्स्ट पॉइंट आमे पढिबा द मिड पॉइंट मेथड सेकंड मेथड आमे पढिबा पिला माने द रेवेन्यू मेथड राइट फर्स्ट आमे पढिबे द मिड पॉइंट मेथड सेकंड आमे पढिबा द रेवेन्यू मेथड लेट्स स्टार्ट विथ द मिड पॉइंट मेथड अंडर द मिड पॉइंट मेथड आमे कोन करबा पिला माने आमे मिड पॉइंट बाहर करके इलास्टिसिटी कैलकुलेशन करबा लेट्स सपोज देयर इज ए पर्सन हु वांट्स टू मूव फ्रॉम द पॉइंट ए टू पॉइंट बी from point A to point B ठीक अच्छी पॉइंट ए रे प्राइस केते अच्छी पिला माने लेट्स सपोज पॉइंट ए रे प्राइस अच्छी 4 rupees and with 4 rupees he wants to buy 120 quantity केते कौन पिला माने 120 क्वांटिटी राइट एंड एट पॉइंट 2 प्राइस अच्छी जिते से पॉइंट 2 को जाउची पॉइंट 2 रे प्राइस अच्छी पिला माने लेट्स सपोज इट इज योर 6 rupees and the quantity will be here 80 प्राइस बढ़ी गला क्वांटिटी कमी गला राइट अंडर दिस मेथड प्राइस इलास्टिसिटी जिते बेले हमें बाहर करछु पिला माने कौन होची प्राइस केते मूव कला फ्रॉम ए टू बी लेट्स सपोज प्राइस केते चेंज हला पिला माने 6 minus 4 is equal to 2 6 minus 4 by 4 is equal to 2 by 4 is equal to 0.5 or 50% चेंजेस प्राइस केते चेंज कला पिला माने 50% चेंजेस हला क्वांटिटी केते चेंजेस हला क्वांटिटी चेंजेस केते हला क्वांटिटी चेंजेस को देखबा को हेले आमे क्वांटिटी रो भी मेजर करबा 120 minus 80 divided by 120 into 100 परसेंटेज टर्म भी देखि परिबा this becomes your 120 40 by 120 into 100 this become your this is equal to 1 by 3 into 100 or 100 by 3 is equal to 33% right केते चेंजेस हला केते चेंजेस हला पिला माने एठी हमें कोन देखुचे प्राइस चेंजेस हेछि 50% क्वांटिटी चेंजेस हेछि 33% इलास्टिसिटी केते आसीबो इलास्टिसिटी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कोन कहउचे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस that means here price elasticity of demand केते होबे पिला माने
PD which is otherwise known as EP आमे नौचे EP is equal to केते होचे percentage change in QD is equal to 33% divided by percentage change in price is equal to 50. एटा elasticity केते बेले बाहरला elasticity from A to B बट जिते बेले आमे elasticity B to A बाहर करिबा from point B to point A elasticity बाहर करिबा तेबे कोन हबो लेट्स सी हियर from point B to point A गले प्राइस चेंजेस होची केते प्राइस चेंजेस देखिबा प्राइस चेंजेस केमिति मेजर करिबा लेट्स सपोज ओरिजिनल प्राइस 6 minus 4 divided by 6 into 100 परसेंटेज रो बाहर जीवो दिस इज योर 2 by 6 into 100 or 1 by 3 which is equal to 1 by 3 into 100 which is nothing but 33%, right? Quantity changes देखिबा change in quantity केते चेंज होउची इनिशियली जेते बेला हमें पॉइंट B रु पॉइंट A को मूव करूची इनिशियल क्वांटिटी 80 minus 120 divided by 80 into 100 परसेंटेज टर्म रे हम कन्वर्ट करिबा this would be your 40 divided by 80 minus 40 obviously elasticity रे हमें सिंबल को इग्नोर करथा मन रखिथा into 100 is equal to 1 by 2 into 100 is equal to 50%, right? एबे प्राइस इलास्टिसिटी केते बाहरिबो price elasticity of demand exactly the formula percentage change in QD divided by percentage change in price. ऑलरेडी वीडियो अच्छी चैनल जाइए अपन मैंने देखी पारे राइट एबे कौन होची परसेंटेज चेंज इन QD इज इक्वल टू 50% चेंज होईची 50% चेंज होईची प्राइस 33% चेंज होईची राइट एबे हमें कौन देखिले पिला माने आमे देखिले दुईटा डिफरेंट कांसेप्ट फ्रॉम पॉइंट B to point A, right? जिते बेला हमें पॉइंट A रु पॉइंट B को मूव करूचे इलास्टिसिटी इज हियर 33 by 50 and point B to point A move करूचे elasticity become just opposite 50 by 33 दीटा different concept why बुझेला एई प्रॉब्लम को सॉल्व करिबा पाए मिड पॉइंट मेथड आसी आमे मिड पॉइंट बाहर करिबा कोन मिड पॉइंट बाहर करिबा कहारो प्राइस रो मिड पॉइंट बाहर करिबा ठीक अछि मिड पॉइंट कोन मिड पॉइंट प्राइस रो मिड पॉइंट केते अछि पिला माने प्राइस रो मिड पॉइंट लेट्स सी 4 plus 6 divided by 2 10 by 2 is equal to बाहरी गला केते 5 this is the mid point प्राइस रो मिड पॉइंट बाहरला क्वांटिटी रो मिड पॉइंट केते बाहरिबो 120 plus 80 divided by 2 120 80 200 divided by 2 is equal to 100 मिड पॉइंट प्राइस रो मिड पॉइंट 5 बाहरला क्वांटिटी रो मिड पॉइंट 100 बाहरला एबे इलास्टिसिटी अप्लाई करिबा प्राइस इलास्टिसिटी कोन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड EP इज इक्वल टू कोन हबो पिला माने परसेंटेज चेंज इन प्राइस केते हबो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कोन हे जबो पिला माने लेट्स सी परसेंटेज चेंज इन प्राइस ए जगह हम देखिबा कोन 4 minus 6 divided by 5 এই কোয়ান্টিটি এটা কোন এই 5 কোটো আইছিলা মিড পয়েন্ট কোয়ান্টিটি ইনটু 100 divided by percentage change in quantity is equal to কোন হবো 120 minus
80 divided by 100 into 100. See, এটা কোন from point A to from point A to B. এটা কোন from point A to point B আমি বাহার করুছি। কেতে বাহারিଯିବ 2 by 5 into 100. 5 20 ja 100 is equal to 40. 20 into 2 is equal to 40. केते चेंज है इलास्टिसिटी परसेंटेज चेंज इन प्राइस है 40 डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन एटा 40 by 100 40 by 100 into 100 100 cancel out is equal to 40, right? Is equal to 40 by 40 is equal to 1 हो गला। केते हला प्राइस इलास्टिसिटी PD is equal to 1 आमे पढ़ी छे अकॉर्डिंग टू द काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी जेते बेले 1 बाहर छी ताको आमे यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहबा। कोन यूनिटरी elasticity of demand, right? एबे आमे देखिबा को चेष्टा करिबा from point B to point A, from point B to point A, ठीक अछि। from point B to point A मूव कले इलास्टिसिटी केते आवश्य हम से विषय देखिबा। फर्स्ट ओरिजिनल प्राइस B रे 6 थिला 6 minus 4 divided by 5 into 100 divided by PD लिखि दउछि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड divided by 80 minus 120 divided by 100 into 100. Again this is equal to how much 2 by 5 into 100 divided by 40 by 100 into 100, right? 100 cancel out 40 रहेगा 5 20 ja 100 is equal to this become 40 by 40 which is equal to 1. 40 40 cancel out 1. price elasticity of demand बा price elasticity of demand जहाँ को हमें EP कहूचे केते बाहरला पिला माने 1 बाहरला। again एठी केते बाहरला पिला माने 1, that is unitary elasticity of demand, right? एबे बुझियला elasticity of demand ए जगह रे व्यवहार हेची केमति व्यवहार हैला मिड पॉइंट मेथड ए जगह रे व्यवहार हैला। मिड पॉइंट मेथड आमे मिड पॉइंट दो तेणु करी मिड पॉइंट मेथड रे आमे कोन करबा मिड पॉइंट मेथड रे आमे जो फार्मूला यूज करछे दैट फार्मूला हियर प्राइस elasticity of demand is equal to कोन हैला प्राइस elasticity of demand is equal to कौन है जो पिला माने price elasticity of demand becomes here Q2 minus Q1 divided by Q2 plus Q1 by 2, ठीक अछि। divided by P2 minus P1 divided by P2 plus P1 by 2, ठीक अछि पिला माने दिस इज द मिड पॉइंट मेथड। मिड पॉइंट मेथड आमे कोन कले मिड पॉइंट बाहर कले दिस इज द मिड पॉइंट प्राइस and this is the midpoint quantity, right? so midpoint method complete हैला। चलो तो हम सेकंड मेथड देखिबा। सेकंड मेथड कोन कहूची पिला माने सेकंड मेथड हमको कहूची रेवेन्यू मेथड, राइट? सेकंड मेथड इज द टोटल रेवेन्यू मेथड। द रेवेन्यू मेथड याको हमें टोटल रेवेन्यू मेथड भी कहि दाऊ, राइट? याको हमें टोटल रेवेन्यू मेथड भी कहि दाऊ। एबे हमें देखिबा टोटल रेवेन्यू मेथड। टोटल रेवेन्यू मेथड रे हमें रेवेन्यू बाहर करिबा बा टोटल रेवेन्यू बाहर करिबा
ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ହାଉ ଦିସ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ହେଲ୍ପସ୍ ଇନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦ ଇଲାଷ୍ଟିସିଟି ଅଫ୍ ଡିମାଣ୍ଡ, ରାଇଟ୍? ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା ରେଭିନ୍ୟୁ କେମିତି କାଲକୁଲେସନ୍ ହୁଏ। ରେଭିନ୍ୟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଟୁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, right? Revenue is equal to कौन? Price into quantity, or total revenue TR is equal to P into Q. This is the formula, right? यही formula को नहीं कि हम calculation करेगा. Let's see. यही formula graph रे केमिति apply हुए. Zero x y. धरी नहीं आ जाओ. This is the demand curve. DD and accordingly this is Q, this is P. ठीक अच्छे आम ये कौन पाइचे ये गोटे पॉइंट पाइचे अकॉर्डिंग टू पॉइंट ए ए पॉइंट अकॉर्डिंग टू पॉइंट ए रेवेन्यू इज इक्वल टू कौन हम ओ पी ए क्यू एरिया या जदि आम नंबर कैलकुलेशन करवा सपोज दिस इज 2, दिस इज 4 and this is 6 and this is 100, this is 200, 0. रेवेन्यू केते हबो? रेवेन्यू इज इक्वल टू P into Q. P is equal to how much? P is equal to 4 and Q is equal to 100. So revenue would be here 400. Okay, now let's suppose price fall. Price falls to 2 rupees and accordingly we have 150 quantity. What has happened to the revenue? New revenue is equal to how much? New revenue is equal to 2 into 150 is equal to how much? 300. What is happened? Revenue decrease. Price fall kala, revenue decrease kala. Right? Revenue कौन कला? Decrease कला. जदि revenue decrease कला, what has happened to the elasticity? Elasticity कौन है? Okay, let me demonstrate you here. Elasticity को understand करबा को हेले we need 3 concept. ए जगह हमें 3टा concept पढ़ेबा. कौन पिला माने? First होची when demand is inelastic. When demand is inelastic. Demand यदि inelastic हवा पिला माने that is EP is less than 1. ठीक है? Price and total revenue ठीक है? कौन? Price and total revenue moves in the same direction. ठीक है? प्राइस और टोटल रेवेन्यू कौन है पिला माने सेम डायरेक्शन रे मूव करिवे. सी आवर एग्जांपल रे कौन हैला? प्राइस फॉल कला एंड रेवेन्यू डिक्रीजेस, रेवेन्यू भी फॉल कला. तारते कौन? डिमांड इज इनइलास्टिक. ए जगह डिमांड कौन हैला? इनइलास्टिक है. आपको आसिले पढ़िबा सब जिंस. फर्स्ट पॉइंट हम कौन पढ़िछे पिला माने? फर्स्ट पॉइंट हमें देखिले when demand is inelastic, जेते बेले डिमांड लेस देन 1 हबो, प्राइस और टोटल रेवेन्यू सेम डायरेक्शन रे मूव करिवे. ठीक अछि? प्राइस इंक्रीज कले टोटल रेवेन्यू इंक्रीज करिवो, प्राइस डिक्रीज कले टोटल रेवेन्यू डिक्रीज करिवो. सेकंड पॉइंट कोन कहूछि? when demand is elastic, that is कौन पिला माने EP is greater than 1. ठीक है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 हबो,
ताहले टोटल रेवेन्यू और प्राइस ऑपोजिट डायरेक्शन रे मूव करेंगे. Then price and total revenue moves in opposite direction. Right? Opposite direction रे मूव करेंगे. 3 नंबर पॉइंट. 3 नंबर पॉइंट कौन कहूची? If the demand is unit elastic বা unitary elastic, if the demand is unitary elastic, right, that is, what is that? EP is equal to 1. EP is equal to 1, then total revenue remain constant. Total revenue किसी चेंज हेबनी when price change. प्राइस चेंज हेले टोटल रेवेन्यू रे किसी चेंज हेबनी. ठीक अछि पिला माने कोन आउ थरे कहि दउची. If the demand is unitary elastic, that is EP is equal to 1, then total revenue remain constant when price changes. Price change हेले भी total revenue रे किसी चेंज हेबनी. This is the unitary elasticity of demand. Let's take some examples here. Okay, एबे हमें देखिबा पय टिके चेष्टा करिबा. एठी गोटे ग्राफ अछि. एठी हमें क्वांटिटी नै छै. Here is the price, here is the quantity 0. Price quantity अछि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 and the price अछि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Right? एबे हमें देखिबा पय चेष्टा करिबा सी कोन देखुची हमें जेतले प्राइस फॉल करूची from 7 rupees to 6 rupees to 5, right? एट प्राइस फॉल करुचे, क्वांटिटी इंक्रीज करुचे 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Accordingly रेवेन्यू भी इंक्रीज करिवो अप टू सर्टेन पॉइंट. 6 दुणे 12, 5 चौ 20, 6 चौ 24, 8 3 24. रेवेन्यू इंक्रीज कला, कांस्टेंट रहिला, देन रेवेन्यू फॉल कला. राइट? एठी हमें देखुचे रेवेन्यू जोटी कांस्टेंट रहिची सेटा कोन होची यूनिटरी इलास्टिसिटी. एटा अपोजिट डायरेक्शन कोन प्राइस फॉल करूची रेवेन्यू इंक्रीज करूची. अपोजिट डायरेक्शन रे जाउछन्ते. अपोजिट डायरेक्शन रे जते बेले जिवे एटा इलास्टिक हबो. आ सेम डायरेक्शन जते बेले मूव करिवे सेटा इनइलास्टिक हबो. एटा हमें ए टेबल रो पढिछि. ठीक अछि. तापरे एबे देखिबा अदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम कोन पढिबा सी आमे सेकंड टा फर्स्ट टा तो पढि सारछि. सेकंड हम पढिबा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. और 3 नंबर पढ़िबा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. राइट? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कोन कहूची? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कोन कहूची पिला माने? द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड measures the income elasticity of demand measures how the quantity demanded changes as consumer income changes. Consumer's income changes. Consumer's income changes. कौन कहूची जेते कंज्यूमर्स रो इनकम चेंजेस by 1 unit. When consumers income changes by 1 unit, how much quantity demanded changes is the income elasticity of demand. Right? फॉर्मूला कौन कहूची इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मु EI कहि दउची. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हमें कौन कहूचे EI कहूचे. यार फॉर्मूला कौन हबो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. परसेंटेज चेंज इन quantity demanded divided by percentage change in
percentage change in income, right? Percentage change in income या को जेते आमे देखिबा कोन हबो फार्मूला EI is equal to delta Q by Q into 100 divided by delta I by I into 100. 100 cancel out. This is equal to delta Q by Q divided by delta P by P, which is delta P no, delta I. Delta I by I. This is equal to delta Q by Q into I divided by delta I, and is equal to, this is equal to like term पाखे पाखे रखी देबा Q over delta I into I over Q. This is the income elasticity of demand. ठीक अछि तापर हमें देखिबा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्रॉस 3 नंबर पॉइंट, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, right? Cross elasticity of demand कौन कहूची? It says or it measures how much quantity demanded changes of one goods demanded changes of one good due to change in price of other good, right? Price of other goods change हेले quantity demanded of one goods change होची. That has to be measured here. See, other goods को goods 2 कहबा हमें फॉर्मूला कौन कहूची? या को हमें क्रॉस को C लिखिबी EC elasticity or cross elasticity of demand. एटा कौन कहूची? percentage change in quantity demanded of goods 1 divided by percentage change in price of good 2, right? या को जेते बेला में देखिबा delta QD1 divided by QD1 divided by delta P2 divided by P2 या को हमें EC कहबा, which is equal to into 100, obviously 100 cancel out. This is equal to delta QD1 divided by QD1 whole divided by delta P2 by P2, which is equal to delta QD direct लिखि दोची over delta P2 into P2 over delta QD1 QD1. This is the price, this is the cross elasticity of demand EC, right? एतिकी सरी आज पाठ. नेक्स्ट क्लास रे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ा. थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. वीडियो जदि भल लगी पे मैंने वीडियो को लाइक कर दिंतु, चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु, और हाँ सांग मान सहित वीडियो को शेयर कर दिंतु. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग.